हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इज 12th ऑफ जनवरी 2024 और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो चल रहा है हाल हकीकत उसके बारे में पता करेंगे। एंड दिस वीडियो इज लार्जली विल बी इन इंग्लिश, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश टू रीच द ग्रेटर ऑडियंस। तो चलिए थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग जहाँ पे हैं दैट इज द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट। बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, बढ़िया वेबसाइट है रिगार्डिंग सम इकोनॉमिक डेटा। माय बेस्ट प्रेफर्ड वन इज मैक्रो माइक्रो हियर। I'll come to, but let's first look at the calendar. We had this number yesterday night, US inflation data जो प्रीवियस था 3.1, कॉन्सेंसस था थोड़ा बढ़ेगा 3.2, बट इट केम मच हायर 3.4। तो इससे कुछ लोग एजम करते हैं कि कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज हाई, फेड विल प्रोबेबली नॉट कट रेट्स। नो, दैट इज नॉट हाउ द फेडरल रिजर्व वर्क्स। Federal Reserve is definitely going to cut interest rate. It has given two interest rate cut. Very likely market is projecting the first one to be in March, the inflation rate cut. I have a slight tilt that Federal Reserve might start with this immediate next meeting it can start with. But if not, it is very likely to start with the March meeting. Because core inflation, where it was looking at consensus were a bigger forecast, but it fell. 3.9% core inflation, and unless we have some inflation shock, कुछ अचानक से शॉक आ जाए, जो डेवलपमेंट चल रहा है मिडिल ईस्ट regarding Red Sea, Houthi rebels, Israel attack, overall Middle East is heated up. So that can impact oil price and overall supply chain cost can go up. That can contribute to the inflation expectation. So unless वो चीज हो रहा है inflation expectation, this is very likely core inflation जो है वो नीचे जा रहा है, and Fed is going to follow up with interest rate cut. बट कल जो हुआ, कल इंटरेस्ट रेट ऑन द हायर साइड था, तो एज अ प्रिकॉशन, एज अ बाउंस बैक बोला जा सकता है। बॉन्ड मार्केट हैड अ बाउंस बैक, मींस ओवरऑल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट बाउंस। थोड़ा चार्ट में चलते हैं, लेट्स लुक एट द बॉन्ड मार्केट। 2 year interest rate or daily chart I have placed. So you see, this is, let's bring the 10 year. 10 year went as high as 4.05 after the release of the data and then could not hold up. Those who attended my session, we talked about this yesterday, that if the inflation comes higher, very likely interest rates can go up, but it will not sustain. It will not sustain because Federal Reserve is going to cut interest rates. That market has got the clear message from the Fed. Overall level of interest rate inflation, if it's a 3 month average, then it is steadily going down. So one data is not going to change the Federal Reserve's mind. Inflation is still around headline at 3.4, where Fed funds rate is at 5.25 to 5.5 range. So real rates जो है वो pretty positive है. So ultimately, the interest rate could not sustain. Now, Fed meeting is coming up at the end of the month. Till that time, we may not see a major movement, influencing move in the interest rate. अब जहां पे हम लोग आ जाएंगे, दैट विल बी द यूएस डॉलर। डॉलर इंडेक्स हम लोग चालू करेंगे और इसके लिए हम लोग लाएंगे, विल ब्रिंग आवर फेवरेट इंडिकेटर टू, विल हैव टू हाइड द ओरिजिनल कैंडल को, हाइड करना पड़ेगा, and we'll have to create the fountain of gold, SD Rainbow Wave version 1 and SDRSIX. These two are the indicators. We'll be doing foreign exchange. We'll apply the foreign exchange setup, and SDRSIX I've already added. I'll make it a regular setup. So now, as we said, dollar is range bound. There is no major change in that outlook yet. Still range bound. If dollar is range bound, that means Euro USD
is also range bound, is showing some strength, definitely strength show kar raha hai, but it is still range bound. It's a red candle, green socks. Market is nowhere with bullish range. This is more of a bullish range. Bull buy trade win probability 53, range होने का probability 57. So दोनों मिलाए तो bullish range kind of a market situation is this. 125 minutes जो not a bad time frame for outsiders India to trade on a swing time frame. So swing time frame is showing strength. Euro is going up, and but candle ka stop loss is too tight, 0.975, and chal raha hai, it's almost 7 pips stop loss. So I don't think this stop loss is going to work, but this green is a good sign. But you can see the turn flattishness in the momentum. So or momentum chahiye, or dollar index really needs to turn bearish for significant downside momentum. There are some bearish pressure, but daily chart देखा जाए तो candle is still quite big. So to reverse it, reversal, we need a full red candle. So full red candle may take some more time to happen. That means some more range bound price action we can expect from the US dollar. Dollar strength is down minus 2.8 compared to yesterday. But हम लोग इसको कंपेयर करेंगे फ्रॉम लास्ट फ्राइडे, तो इसको 5 डाल दिया तो 5 ट्रेडिंग डेज बिफोर. तो 5 ट्रेडिंग डेज से दिखा जाए तो डॉलर हैज लॉस्ट सम स्ट्रेंथ बट ब्रॉडली फ्लैट. यूरो इज द बेस्ट परफॉर्मर. Yen has recovered its losses but is a flat, much worse performer than euro and pound. INR is much weak. Indian rupee is much weak this week compared to the others. Gold is weak, silver is weak, both इस हफ्ते में compare when compared to the basket. ये जो basket आप लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का बास्केट है. यहाँ पे अगर गोल्ड का स्ट्रेंथ या इंडियन रूपी का स्ट्रेंथ 54.8, इट इज शोइंग, इट बेसिकली मींस Indian rupee ka strength is 54.8 when compared to US dollar, euro, pound, yen, gold, and silver, means rest of the basket. So when compared to the rest of the basket, yen, INR strength is this. This matrix helps us to play the long short strategy in foreign exchange. So let me now make it normal, auto. So Euro USD, we were discussing. So relatively light bullish, will not be aggressive because stop loss too tight. Is more of a rangish price action. No trade in daily with a mixed candle. We better wait for a bullish candle. Now this one is background is green, so bull is broadly still on the stronger side. अब हम लोग देखेंगे GBP USD को. जीबीपी यूएसडी में और एक बाई सिग्नल आ रहा है आज. प्रीवियस जो भी बाई अटेम्प्ट था वो काम नहीं किया, बट इट कैन गो अप. जीबीपी यूएसडी दिखा रहा है इट इज बाई ट्रेड जीतने का चांस 89% है. विन प्रोबेबिलिटी, दैट इज वेरी गुड. बट यहाँ पे इट कैन स्ट्रगल एट दिस लेवल विच इज माउंटेन टॉप रेजिस्टेंस. बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस होता है, या सपोर्ट ऑपोजिट साइड, दिस विल बी सपोर्ट. So this acts as a strong resistance area. So now the GBP USD can actually move to the upper range and struggle here. Let's come to GBP USD in 125 minute swing frame. यहाँ पे देखिए मोमेंटम थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है. भले ही यहाँ पे चार्ट ऊपर जा रहा है, प्राइस जा रहा है, कैंडल जा रहा है. इफ आई लुक एट दैट इन द स्विंग फ्रेम, बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी 64. That means jumping to it may not be, first of all, a great idea. This is a clear momentum divergence if pound does not continue to move up. So these two things are worrying for GBP USD. Today is a Friday. So I do not see any reason to jump into big position. If we feel, yes, this is a buy that we want to try, yes, of course we can try with a 2726 area. This area is a stop loss.
25, 1.272526. But it is currently at a strong resistance of 1.278, and it may face further. This is the main resistance area. Very likely हम लोग बहुत ही टाइम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाउंड विल रीच दिस लेवल, बट उससे पहले ही स्ट्रगल चालू हो गया था। अब हम लोग आ रहे हैं यूएसडी जेपीवाई में। After a strong up move, we discussed Japanese yen, USD dollar yen has reached several levels. These are levels we discussed, strong resistance level. It has reached those level, and now we are seeing a correction. We are seeing a correction with the red caps. We are seeing a turnaround in the momentum. Overall momentum has faded. Buy trade win probability is still down. Preferred trade remains buy support and sell resistance. So we can take away some money home as it reaches several of our support and wait, because it has further opportunity के ऊपर जाएगा. It can break higher, but now we'll have to wait unless the momentum returns or we see a full green candle. Next जो हम लोग देख रहे हैं, that is the Euro INR. Euro INR is not that bullish even for a short term. It's a mixed in daily. Best to not do anything in Euro INR, but in shorter frame देखा जाए तो it is bullish. So let's bring the shorter frame. थोड़ा time लग रहा है. Yeah, shorter frame it's a bullish, but lot of resistance. Flat areas जो है that acts as resistance in the rainbow setup. So that means there is a resistance at 191.282930, तो वही एरिया पे अभी है. So after yesterday's range break, we are seeing a continuation. It can go up, but not without the struggle. क्योंकि अभी भी as per higher time frame daily 125 का higher daily होता है. So daily में we are not yet to see a significant buy action. Even the short term trend is neutral. नेक्स्ट जिसको हम लोग देख रहे हैं वो है जीबीपी आईएनआर. जीबीपी आईएनआर गिवन अ फुल ग्रीन कैंडल. ये देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ है कि जब ये लेवल का ब्रेक होगा तब जाके हायर क्वांटिटी का सोचेंगे. बट इफ पाउंड कम्स बैक, जीबीपी आईएनआर लॉन्ग कैन बी ए गुड ट्रेड. क्यों? क्योंकि ये माउंटेन टॉप का रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है. स्ट्रगलिंग, बट इफ सक्सीड्स दिस कैन बी ए गुड रन टिल 107.4 एरिया. सो जीबीपी आईएनआर का आई कीप अप. बहुत बार इससे पहले भी एक बाई अटेम्प्ट था, वो दैट डिड नॉट वर्क आउट. आप लोगों को मालूम है इफ यू आर रेगुलर वॉचर. वंस अगेन ये अटेम्प्ट आ रहा है, बट ये सिग्नल वैलिड होने के लिए वी हैव टू वेट टिल द डे क्लोज. सो एटलीस्ट वेट टिल द यूरोपियन आवर्स 11:30 12:30, देन विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन. नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं जेपीवाई आईएनआर को. JPY INR was a solid bearish. We talked about this, and it has reached, अगर normal candle light has reached several of the target region. So इस एरिया पे बेस्ट होगा कि थोड़ा प्रॉफिट जो है वो हम लोग घर लेके जाए. और फिर से ये देखिए मोमेंटम में टर्न अराउंड आया है. जब मोमेंटम फेड हो रहा है, इट्स बेस्ट वी टेक सम प्रॉफिट होम. Today is a Friday, and wait for further clarity. If this breaks up, then we can add further quantity. उसमें और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्रॉस पेयर्स को. यूरो येन, इसको भी आप जीरोधा में बना सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम इंडिया के बाहर का कुछ डिस्कस कर रहे हैं. ये यूरो येन का जो पोजीशन बहुत ही बढ़िया उम्दा है पोजीशन. क्यों? ये देखिए ये जो ब्रेक हो रहा है, बहुत ही केयरफुली देखिए ब्रेक को. ये जो ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है पार्शियली स्लैंटिंग जोन से. स्लैंटिंग मतलब ऐसे ऐसे करके जो लाइन है वहां से वो ब्रेक हो रहा है. तो अगर इस टाइप में ब्रेक में जो यहां से ब्रेक हो नहीं पाया, नेक्स्ट यहां से ब्रेक हो रहा है, दिस टाइप ऑफ ब्रेक इज वेरी गुड. दिस मीन्स द बुल्स विल रिटेन द स्ट्रेंथ. इसको फ्लैट जोन को ब्रेक नहीं करना पड़ा. इट इज नॉट ब्रेकिंग द फ्लैट जोन, इट इज ब्रेकिंग वाया अ स्लैंटिंग जोन. So in such case, usually देखा गया है कि test the previous these highs. That means 163 will be a game. So euro yen rather can remain a focus of mine.
नेक्स्ट हम लोग जिसमें आ रहा है पाउंड येन, बहुत ही बढ़िया मूव हुआ इसका लॉन्ग पोजीशन के बाद। कुछ लोग शायद स्पूक हो गए थे जब ये करेक्शन आया था, अरे क्या हो रहा है, प्रोबेबली लॉस हो जाएगा, बट नाउ लुक एट इट, पाउंड इज मूविंग, बट दिस वन इज लाइकली टू स्ट्रगल एज इसका ब्रेक हुआ है थ्रू द फ्लैट जोन, बट स्टिल 188 लेवल डेफिनेटली जा सकता है। आज मोमेंटम फ्लैट है, so today may not be a great day to jump into trade। एक चीज ध्यान रखना होगा, जो फोमो ट्रेड छोटा क्वांटिटी डाला जा सकता है अगर ये 185 के ऊपर सस्टेन करता है बियॉन्ड यूरोपियन आवर्स, मतलब 11:30 12:30 पीएम इंडियन टाइम व्हेन लंदन मार्केट ओपन्स अप। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यूरो जीबीपी। ये पेयर यूजुअली आई डू नॉट ट्रेड, इट्स अ स्लो मूवर, लार्जली रेंज बाउंड, बट इसमें आज मौका आ रहा है कि यूरो को बेचो और पाउंड को खरीदो, क्योंकि ग्रीन कैप्स के बाद, आफ्टर ग्रीन कैप्स वी आर सीइंग अ फुल रेड कैंडल। इफ दिस सस्टेन्स टिल द एंड ऑफ द मींस क्लोजिंग तक वी नीड टू वेट। if it sustains till the closing, we can see further down move towards 85.7 or 22 pips. Definitely this move is likely. I don't know if further will we can drop, but that will depend, but this is a strong support area, so this is where very likely some stopover, thoda rukna, is will be very likely। नेक्स्ट हम लोग जिसमें जा रहे हैं दैट इज द गोल्ड। गोल्ड हैज बीन बियरिश, बट यहाँ पे पहली बार अब बैकग्राउंड हैज टर्न येलो, सो सम रिकवरी वी आर एबल टू सी हियर आफ्टर द बिग मूव फॉल डिक्लाइन, बट इट्स इन नो मैन्स लैंड, किसी के हाथ में नहीं है। कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी है 64%, रेंज होने का प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्टेड है 64%। सिल्वर एक्सचेंज यूएसडी, इसमें ओवरऑल मैं बियरिश था, बट ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वही रेंज में सिल्वर इज स्पेंडिंग इट्स टाइम। ओवरऑल बियर का स्ट्रेंथ घट रहा है क्योंकि साइज ऑफ द कैंडल विच इज स्टिल रेड इज कमिंग डाउन। सो भले ही नॉर्मल कैंडल बुलिश हो, यहाँ पे ग्रीन कैप्स शो नहीं कर रहा है, मतलब bulls are not that important, but bear strength is falling। if you calculate the size of the candle, portion of the red is falling, so overall strength of the bear is definitely falling। 125 मिनट में 125 मिनट शॉर्ट टर्म स्विंग फ्रेम देखा जाए, इट्स मोर ऑफ अ मिक्स सिचुएशन, सो यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ इन सिल्वर। सिल्वर यहाँ पे इंडिया में इट वाज अ गुड फॉल, बट आफ्टर दैट वेरी लाइकली आफ्टर द गुड फॉल we can see we are likely to see some bounce back, a beautiful break on 125, those who have taken it 71,945, this can be an important stop loss to look through। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, वो स्टॉप लॉस को देख के आप होल्ड करना चाहते हैं, दिस इज द ब्रेक वी डिस्कस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 71,547। इसको ब्रेक हुआ कल, एंड फर्दर ब्रेक डाउन इन इंडियन सिल्वर कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इंटरनेशनल में आज बाउंस बैक हो रहा है तो इंडिया में भी होगा, बट इफ ये सस्टेन करता है बिलो दिस लेवल, वेरी वेरी लाइकली दिस इज कमिंग फर्दर लो डाउन। बट इसको जो बियर्स ने ब्रेक किया है दैट इज ब्रोकन फ्लैट लाइन, मतलब उनका भी ताकत खो गया है। सो यहाँ पे जो स्ट्रगल चल रहा है दैट इज वेरी लाइकली वी मे नॉट गेट स्मूथ ब्रेक, बट अभी भी बाई करने लायक कुछ है नहीं। सेल ट्रेड का जीतने 50-50 चांस, 50 चांस कि सेल जीतेगा, 50 चांस रेंज होगा, बाई का 0। सो इट्स अ बियरिश रेंज मार्केट जहां पे हम लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। सो ये रहा एनालिसिस फ्रॉम मेरे साइड, बोथ ऑन द फॉरेक्स मार्केट एंड द प्रेशियस मेटल्स जो हम लोग एक साथ करते हैं। आई होप ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, यू आर लाइकिंग दिस वन, एंड इससे आपको हेल्प हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डोंट फॉरगेट दैट वन। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।